So all of you are for SPI? Yes, sir. Okay, so all of you want to join the Indian Armed Forces? Yes, sir. So why do you want to join Indian Armed Forces? Tell me. Patriotism is one. To serve the nation. Okay. Proud of nation. Job satisfaction. I want honest answers. See, let me introduce myself first. I am Wing Commander Alok Sahai. Okay. I have been doing SSB coaching for more than 2 decades, approximately 22 years. Okay. And I have served in the Indian Air Force for 25 plus years. I'm ex-Kargil. I was in the Kargil operations, main controller of all airstrikes during Kargil war. So you can also see me in the documentary which is there on Amazon Prime. Kargil 1999, there is this documentary there on Amazon, Geo also. If you see that documentary, you can see me there, okay? And after completing my services to the Indian Air Force, I have been in the corporate world for more than 7 years. I was at Mumbai International Airport looking after domestic and international operations as AGM operations. Then I was also heading 4 departments in the Apollo hospitals. So I have done quite a bit different kinds of job in my life. And I'm also a regular panelist on national mainstream TV news channels. Do you see TV news? So if you see TV news, TV9 and News 24, I'm very frequent. I'm almost every week on these channels. They call me as an expert to give commentaries or to give discussion. You know, they call experts to have discussion on some issues. Have you seen? Dekha hai? So they call me on news channels for my comments, for discussions. G News, India TV, News 18, Republic Bharat, TV9, and News 24. These are the channels with which they call me very frequently. Okay, so I can show you the last which I appeared just 2 days back. Would like to see that? Yes, sir. Okay. काफी पुराने रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुछ मुद्दों पर आपस में तनकी बढ़ी है और वो मुद्दे कई रहे हैं। एक तो वहाँ के जो मलेशिया है उनको उनके राइट्स को लेकर न्यूज़ 24 कुछ सालों तक डे फॉर यस्टरडे 40 लाख के करीब भारतीय वहाँ हैं। और दूसरा मुद्दा है कि बार-बार नेपाल जो है वो चीन की तरफ उसका झुकाव होता है और वो ओके So there are about 400-500 TV appearances, videos about me that you can see at different times. So I have done so many things in life, but now in a very concerted manner, I have started coaching youngsters for different platforms, especially in the Indian Armed Forces, for the Indian Armed Forces. For UPI preparation also, I'll be taking some classes and I'll be preparing you for the interviews, especially. I'll tell you how to face the interview. What are the likely questions which are asked? इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर आपके अंदर क्या खोजता है, क्या देखना चाहता है, ये टैक्ट मैं आपको बताऊंगा वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में। पहले आप रिटन की तैयारी करो, इसके साथ साथ एक जनरल मेंटल लेवल होना चाहिए आपका। उस मेंटल लेवल को आप कैसे अचीव करेंगे किसी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए,
आपको अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने का मतलब, हर कोई बोलता है कि सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी। सोच बदलना क्या है, कोई बता सकता है? उसका एक एग्जाम्पल देता हूं तुमको, तब तुमको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक वर्ड देता हूं, उस वर्ड से तुम्हारे अंदर जो भी इंस्टेंटली सेंटेंस एक आता है दिमाग में, वो एक सेंटेंस लिखो। ठीक है, ठीक है, लिखो जो भी सेंटेंस, एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकता है, वन सेंटेंस ओनली, जो भी दिमाग में आता है वो लिखो। रेडी? देयर विल बी नो टाइम, द टाइम विल बी ओनली 10 सेकेंड्स। मैं वर्ड बोलूंगा, कटाक से एक सेंटेंस लिखना है। 10 सेकेंड्स में हैंड्स डाउन, पेन डाउन। अंडरस्टूड? ओनली 10 सेकेंड्स। 2 या 3 वर्ड बोलूंगा, उस पर 10 सेकेंड का समय दूंगा, तुरंत एक सेंटेंस लिखना है। रेडी? हाउस, वाटर, एक सेंटेंस लिखना है। ओके, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, खेलकूद, स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स। ओके, पेन डाउन। Now tell me what I have written by on house. My house is in green area. Green zone. My, speak louder. My house is in green zone. My house is in green zone. First of all, I want all of you to speak very loud. Your speech should express confidence. Indian Armed Forces people do not want somebody who is underconfident. तुम जानते हो और नहीं जानते हो इज इमटेरियल। नॉलेज तुम्हारा 0 है, 1 है, 10% है, इमटेरियल। वेदर यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट और नॉट, तो आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो आई वांट एवरीबॉडी टू स्पीक लाउडर एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इमटेरियल, तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है, नॉलेज 0 है, कोई बात नहीं है, बट आई डो नॉट वांट टू सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. That is one thing which all of you must have if you are thinking that you want to have a career in the Indian Armed Forces or police forces anywhere. Okay, you, what have you written? Tell me. House. My house is in India. My house is very big. My house is very big. We live in a house. We live in a house. My house is very nice. My house is the sweetest place in the world. Are you seeing everybody is making different sentences? More or less? Everybody is making different types of sentence. So everybody has got different thought process. सबकी सोच अलग है. Do you understand this? What have you written? I have written house is the need for everyone. House is the need for everyone. See, a different idea. My house is beautiful. My house is beautiful. Anybody who has written something very different? Yes. My house is near the railway station. Louder, louder. I want to see confidence in your voice. In my house, I was enjoying my time with my siblings. Now tell me, boys, think. All of you understand English, what I'm saying? Yes, sir. Okay. What is the most important thing of a house, about house?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउस का क्या होता है? कंफर्ट, फैमिली मेंबर्स. अच्छा, एक मिनट. नो, you still you have not got. Who said this? Stand up. He is the boy who has maximum chance of cracking. I tell you why. Sit down. Imagine, आदमी ने जब पहली बार घर बनाया होगा, क्यों बनाया होगा? आदमी जंगल में रहता था ना, पहले इधर उधर घूमता था. तो पहले जब घर बनाया होगा, क्यों बनाया होगा? धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए. प्रोटेक्शन, शेल्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए हाउस इज शेल्टर. रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. मेरा घर अच्छा है, मेरा घर खराब है, डज इट मैटर? दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? नहीं मायने रखता है. मेरा घर ग्रीन जोन में है, मेरा घर रेड जोन में है, मेरा घर ड्राई जोन में है, डजंट मैटर. इसका घर बड़ा है, उसका घर छोटा है, हाउ डज इट मैटर? What matters is the mind who is immediately thinking about the most important aspect of house. House gives shelter. बाकी सब कुछ सेकेंडरी है. माँ बाप, फर्नीचर, फैमिली सब सेकेंडरी है. कोई आदमी अकेले भी घर बना कर रहता है, उसके साथ तो फैमिली नहीं है, तो उसका घर घर नहीं है क्या? तो अपनी सोच ऐसी बनाओ कि जो भी तुम सोचो, जिस चीज के बारे में भी सोचो, हमेशा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ सोचो. इसी को कहते हैं सोच बदलना. अब तुम ये नहीं सोचो कि मेरा घर बड़ा है कि छोटा है, मेरा घर इस जोन में है, उस जोन में है. डजंट मैटर. ये सोचो कि घर शेल्टर देता है यार. वाटर, what have we written? Water Water keeps us hydrated. keeps us hydrated. अब now tell me you have understood what I have told. अब अगर मैं वाटर दूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या रिफ्लेक्स एक्शन में आना चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर का, वो आना चाहिए, है ना? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर? Essential for our lives. Get up. This boy is going to make it, I am telling you. Essential for life. उपग्रह भेज रहे हैं ना दूसरे प्लैनेट्स में, मंगल पे, चांद पे. वो क्या खोजते हैं मालूम है तुमको? They all are searching water on different planets. Why are they searching water? अगर वाटर है तो वहां लाइफ भी होगा. Basically they are looking for a life. There's no AC here. Very hot. Okay. So, understood? So, water is essential for life. Rest everything else is secondary. Oh, my mic is here. And what was the next word? Accident. Okay, what have you written? Tell me one by one. So, accident, a person can learn many things. Accident? A person can learn many things. By accident or in accident, a person can learn many things. Okay. Accidents are occurred due to lack of rules. Accident occur due to lack of rules. I saw an accident yesterday. Louder. Speak louder. I saw an accident yesterday. You saw an accident yesterday. 2 दिन पहले देखता तो कोई डिफरेंस पड़ता? Tell me. The accidents are very dangerous. Accidents are very dangerous. Yes. Accident may lead to death. See, try to understand different.
अलग अलग सोच सबकी। अब मैंने एक चीज बताया कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे तुम्हारा ब्रेन जाना चाहिए, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चीज हमेशा पॉजिटिव तरफ जाना चाहिए तुम्हारा। एक्सीडेंट में लीड टू डेथ, इट्स ट्रुथ, बट तुम्हारा दिमाग डेथ पर ही क्यों जा रहा है, निगेटिव में क्यों जा रहा है? ये गलत सोच है, ये गलत थिंकिंग है। ट्रेन योर माइंड टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बी केयरफुल, स्लाइटली better, but not to the point. I'll tell you. You just imagine you are going on the road somewhere. Okay? होता है ना? All of you must have seen one accident sometime in your life. देखा ही होगा। तुम्हारे सामने में एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली तुम क्या करते हो? सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हो? Help people in accident. If I make a sentence immediately, if accident word is given to me, my sentence will be help people in accident. मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मर जाएगा या बाप रे क्या होगा। मेरे दिमाग में इंस्टेंट आ रहा है कि उसको दौड़ के मदद करो। यही है सोच बदलना। If you train your mind like this right from now onward, every day change your thinking pattern. Think direct, think always useful, and think always positive. If you do this as a practice, a time will come after a few weeks, after a few months, or after a few years, your total personality will be changed. Your total personality will be changed. And wherever you go, you will carry an aura around you. Aura को बोलते हैं, जानते हो, आभा। चेहरे पे एक तेज होती है। जिसकी सोच अच्छी होती है उसके चेहरे पे एक चमक होती है। जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, सोच पॉजिटिव होता है, उसके चेहरे पे चमक होती है। उसका एजिंग स्लो होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा देखा है, उनको जीवन में कुछ नहीं है, धन नहीं है, पर उनके चेहरे पे एक चमक होती है। वो चमक कहां से आती है? वो अंबानी और अडानी जैसा खाना नहीं खा रहे हैं, भिक्षा लेके भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक चमक है। क्यों है? जो सच्चे संत है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इज बिकॉज ऑफ दिस प्योरिटी ऑफ थॉट, पॉजिटिव थॉट्स। You will realize if you do this, 90% of the diseases will not come to you. As per the latest medical researches, it has been proved that almost all diseases initially originate from mind. It has been proved in the medical researches. If your mind is very powerful and very positive, you will not get diseases. Your body will fight all infections. बड़े बड़े ऋषि मुनि बीमार पड़ते थे? क्यों नहीं पड़ते थे भाई? जंगल में रहते थे वो। Mind. Another medical research I'll tell you. It is so powerful you cannot imagine. You cannot imagine. As per the latest researches, a person utilizes maximum 10% of the brain capacity throughout his life. पूरे जीवन में आप अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी है उसका 10% ही यूज कर पाते हो। पूरे लाइफ में। ये मेडिकल रिसर्च में साबित हुआ है। अब सोचो ये ब्रेन कितना पावरफुल है कि तुम अगर 12% भी यूज कर लिए, इसको स्ट्रांग कर लिया, तो तुम क्या से क्या अचीव कर सकते हो।
So it is this thinking, this thought, this mind, this brain which can change you totally. You can't imagine how it can change you. मेरी एज क्या लगती है? 45 plus 60. I am 66. Touch wood, no disease till date. No disease till date. और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो आधे तो बिस्तर पकड़ चुके हैं, 4-4, 5-5 बीमारियां लेके बैठे हैं. किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी है, किसी का बीपी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है. तो ये चलता है क्या? चला दो इसको अगर चलता है. जस्ट स्विच इट ऑन. So students, why I am telling you this is to understand the potential and the power of your mind, power of your thoughts, power of your brain. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. You understood? कोई बात नहीं, छोड़ दे रहे. So what have we learned today? I have given you just a very small portion of my teaching, very small portion, beginning. If I come other days, I'll teach you further. First, you have to change your thinking. Every day, whenever you are going to sleep, try to remember दिन भर किस तरह की बात तुम सोचे. माइंड इज नेवर एम्प्टी. दिमाग कभी खाली नहीं रहता है, पता है ना. तुम बोल रहे हो चाहे नहीं बोल रहे हो, कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट्स रहता है. वो थॉट्स किस तरह का है, वही तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को शेप देता है. हर किसी के जीवन में बुरे वक्त हुए हैं. When you had a very painful experience in life, तुम रोए थे, तुमको मम्मी पापा ने मारा था, या कोई टीचर ने मारा था, या दोस्तों ने पिटाई कर दी थी. Everybody has some very good moments also. जब तुम बहुत खुश हुए थे, you achieved something in school, college, or your parents appreciated you. वाह बेटा बहुत अच्छे, बहुत प्यार किया तुमको. So out of these memories, which are the memories which keep flooding you more? वो बुरे वाले या अच्छे वाले, उस पर ध्यान दो. The people who are very depressed, the people who have suicidal tendencies, उनके दिमाग में सिर्फ बुरे ख्यालात आते हैं, पता है ना. So they are also controlled by their bad thoughts in the mind. So you make a concerted effort every day कि आज मेरे दिन भर मैंने क्या सोचा, मेरे दिमाग में किस तरह की बातें आई थी, उसको चेंज करो. डे बाय डे हमेशा पॉजिटिव सोचो. जहां भी रहो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा. मेरे को ये चीज अचीव करना है, कैसे नहीं होगा. I failed, no problem. I'll rise again and I'll try again. That fighting spirit, that will to do something in life. कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है. एंड डोंट थिंक कि मैं किसी बहुत बड़े शहर पे पढ़ लिख के बड़ा होके ऐसे यहां आ गया हूं. I am also born and brought up at a very small place called Siwan in Bihar. Very backward place. तुम लोग तो बहुत, तुमने तो शहर देखा है,
मैंने तो कॉलेज तक बड़ा शहर नहीं देखा था. I studied in Hindi medium throughout my life. Never got the exposure of reading books in English. Never had English medium. But I cracked JNU. I went to JNU, there it was English medium. I struggled, but I kept on struggling. And in 6 months' time, I was able to speak fluent English. And I started speaking English in such an effective manner that I contested elections and I won the elections, giving his speeches in English. A boy from a very backward, remote place in Bihar. You can't imagine what was the life in Bihar that time. I'm talking of 1981. बिहार अभी भी खराब माना आता है ना. सबसे जो बैकवर्ड एरिया है, स्टेट जो है 4-5, उसमें उसकी गिनती होती है. हमारे टाइम में सोचो और भी कैसा था बिहार. तो मैं भी गांव से उठ के आया हूं बेटा, और आज इस जगह पे हूं कि नेशनल लेवल पे डिबेट करता हूं मिनिस्टर्स के साथ, चीफ्स के साथ. टीवी पे मेरा रेगुलर डिबेट होता है. कुछ भी पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. याद रखना इस चीज को. तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए. जिस दिन वो आग लग जाएगी तुमको कि हमको कुछ करना है, उस दिन तुम अचीव कर लोगे. और वो आग लगने की एक और कहानी है मेरे लाइफ में खुद हुई है, जो मैं बताऊंगा तुम लोगों को. एंड आई अचीव्ड समथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि आग लग गई थी कि करना ही है. समझा? क्यों डरा हुआ क्यों लग रहा है बेटा? व्हाट इज योर नेम? वेदांत शिंदे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कर सकता है ना? है? स्ट्रेट खड़ा रहा यार. यस बोल के यस सर मैं करूंगा. ऑल ऑफ यू कैन डू इट. दैट्स द जोश आई वांट टू सी. ओके, रेस्ट सम अदर टाइम. I'll also teach you motivation. I'll motivate you. I'll teach you English speaking, how to face interview, how to speak day to day. छोटा मोटा बेटा. चूंकि मैं भी बेटा इसी बैकग्राउंड से हूं. तुम मराठी से है, तुमको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा होगा, तो चालू पुर्जा इंग्लिश कैसे सीखना है, बोलना है, मैं बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट वरी. इट्स अ मैटर ऑफ ए फ्यू मंथ्स. तुम इंग्लिश सीख सकते हो. ओके, बोल चालने लायक इंग्लिश आ जाएगा तुमको. फटाफट बोलेगा. घर में माँ बाप बोलेगा अरे माय गॉड ये कहाँ से आया लड़का, क्या सीख रहा है, बहुत बढ़िया जान गया है तो इंग्लिश. ओके, यही हुआ मेरे साथ. यही हुआ. मैं जेएनयू से आया, माय फादर मदर दे वर सरप्राइज्ड. ये 6 महीना में अंग्रेजी बोल रहा है फटाफट. तो कुछ भी हर चीज पॉसिबल है बेटा. ओके, लगन चाहिए, लगन. करेगा? I want to see all of you succeed, okay, in life. I'll come some other time also. My session ends today for today. If you have anything to ask, you can ask me. कुछ भी पूछना आप पूछो. तू शर्माता है क्या? खड़ा हो जा. यस, सिट डाउन. दूसरी चीज बेटा, हमेशा आई कांटेक्ट से बात किया करो सबसे. वो जो होता है ना आंख नीचे करके देखना, नहीं, दैट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. वो चोर वाले पर्सनालिटी नहीं चाहिए. एकदम आई कांटेक्ट. लुक इनटू द फेस, लुक इनटू द आई एंड देन स्पीक. आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव कॉन्फिडेंस, गट्स and will to do something in life. कुछ पूछना है? Yes. Which is in my favorite posting? Okay, sit down. See, there were two very favorite postings. One was Srinagar, because
I got a chance to work in a border area, number one, and number two, it gave me an opportunity to play a central role in Kargil operations. I was the controller at air traffic ATC in Srinagar, controlling all air strikes and recovering our fighters back, controlling every day, day in, day out, right from the start of Kargil operation till the end. So I consider that is my very lucky posting because it gave me some experience in life for which I am known all over now. Second is Hyderabad, Air Force Academy. I was posted at Air Force Academy, Hyderabad. There I was heading the ATC department at a very young age. In the history of Indian Air Force, I am the youngest person to head air traffic department in Air Force Academy. I was very young that time. So that also gave me a lot of confidence and pleasure. Every day, thousands flights were there, 1,000 flight, training flight. All basic training of flying is at Air Force Academy, Hyderabad only. Okay, training flying. The two parallel runways operations. So I was I was SATCO there. I was heading ATC department. So it was a very challenging job, ensuring that everything goes incident free. कोई घटना नहीं हो, सब चीज ठीक ठाक रहे. So I was there for about 3-4 years. So these two are my favorite postings. Somebody was asking too. What? Which force is very best force of Indian Air Forces? See, remember one thing, beta. Nothing is best. It is you who make it best. Air Force क्या है? The people who have joined, they are combined known as Air Force. अगर तुमसे बोले भाई आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी कौन है? इंडियन आर्मी जो सारे लोग हैं चीफ से लेकर नीचे तक वही मिला के इंडियन आर्मी बोले जाते हैं ना. सो द पीपल हु आर वर्किंग देयर दे मेक इट बेस्ट. उनके हाथ में है इंडियन आर्मी कैसी होगी. तो इट्स यू हु विल मेक इट बेटर और बेस्ट. दिस वन. हाँ, योर क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सर्विसेज. What is the difference? See, you should try to understand that army is more like a field job, ground pe. Tough life hai. Army life is tough life. During young posting, you will be in border areas, you will be in forward areas where families are not permitted. You will be fighting militants, Naxals, army action. That is not there in the Indian Navy and the Indian Air Force. Day to day, you are not fighting anybody. But Indian Army is fighting every day. That is one difference. Whereas in Air Force, the flyers are at risk every day because he is taking the fighter in air, he is taking the aircraft in air. There is a possibility of crashes and all. He is facing that hazard, tension, pressure. But the advantage in Air Force is that 90% of the stations are family stations. So your families remain with you. So the life is very comfortable in Air Force. Family life is very comfortable in Air Force. And Navy also. But in Navy, there is one hazard. If you go to ship, then for a few months you are out from the family. You are coming back after 2 months, after 3 months. Then again, you remain offshore for another 2-3 months. एक महीना घर आए, फिर 1-2 महीना के लिए गए. So these are the different types of services which has got plus and minus both. Okay, facilities wise, the life is more challenging in army, so facility is also more. Facility is also more. सर आपने कभी प्लेन उड़ाया है, मतलब फाइटर पर? अगर उड़ाया है तो कौन सा बेस्ट लगा आपको? नहीं, मैं उड़ाया हूं नहीं. देखो क्या है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को फ्लाइट को उड़ाने का परमिशन मिलता है, लेकिन एयर में वो हमको पायलट अपने साथ ले जाता है ट्विन सीटर पे. तो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हम परमिटेड नहीं है, वो हम नहीं करते. वो टेक ऑफ करके जाएगा, एयर में जाके वो हमको फील्ड के लिए दे देता है, देन वी फ्लाई.
तो हम जो फ्लाई करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फाइटर्स को, पायलट को कंट्रोल करता है ग्राउंड से बैठ के, तो उसको ये जानना चाहिए कि मैं उसको ऐसे टर्न दे रहा हूं, ऐसे क्लाइंब दे रहा हूं, तो उस पर क्या बीत रहा है। ये फील देने के लिए हमको एयर में ले जाते हैं, और वहां पर मैंने फ्लाइंग किया है। जॉयस्टिक को हाथ में जॉयस्टिक होता है दोनों पैर के बीच में, उससे कंट्रोल करते हैं। तो मैंने किरण उड़ाया है, जगुआर उड़ाया है और मिग 21 उड़ाया है, ये 3 उड़ाया है उस टाइम। What do the Air Force do when there is no war? Plenty. Air Force, very good question. If there is no war, what do we do? Tell me. वार तो है नहीं, फिर हम क्या करते हैं? New fighter planes. अरे डे टू डे क्या करोगे? Training. There is a famous saying, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. शांति के समय जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में तुम्हारा खून उतना ही कम बहेगा। Every day from morning till evening duty hours, everybody does full practice of war. Every day you are doing some exercise, some practice. If you don't do it, on the day of reckoning, on the day of war, you'll collapse. शेर को अपने नाखून और दांत पिजा के रखने पड़ते हैं। Got the answer? Yes. Anything else? चलो, okay, bye. Thank you. See you. Okay. सिवान? कहाँ से? सिवान में कहाँ का? डुमरा का है? कलर। अच्छा, वो राकेश सिंह जानते हैं, जिनका मिग 21 क्रैश हो गया था, हाँ, उनका मतलब भतीजा लगता है। अच्छा अच्छा। कारगिल यहाँ कहाँ रहते हो तुम? यहाँ पे अलीबाग में। राकेश सिंह का कहाँ क्रैश हुआ है? मिग 21 कहाँ पे? वो इतना अच्छे से नहीं, और कारगिल में भी थे। कारगिल में तो मैं कंट्रोलर था, मैं श्रीनगर एयरपोर्ट में। हाँ। उसमें भी थे। कौन से स्क्वाड्रन में थे पता है? मुझे याद है नहीं।